Now let's begin our understanding with the sequence. That part which we just mentioned in our notes. That when you look at the aberrations, challenges to the secularism, we basically found that one of the greatest challenge or aberration to the secularism in India particularly is the communalism. And I had quoted you, I repeat the line which I quoted you, Amartya Sen, that the occurrence and reoccurrence of communal violence makes the spirit of secularism look pale and exhausted in India. And certainly, whosoever is talking about the narratives or any discussions on secularism in India, he would not be able to complete it unless and until he talks about the very ideology of communalism. And particularly in some of where we have written about that the debate which goes out, that secularism is a borrowed concept, a Western concept. For certain matter, let me accept that one. That yes, this is the accepted concept. By philosophical rhetorician तो भूल गया मैं, नहीं लिखवाया, भूल गया, कोई नहीं. अभी अब जहाँ शुरू किया वहाँ शुरू करते हैं. मुझे याद है क्या क्या, तुम्हारे पास नोट्स नहीं है, मुझे याद है, so don't worry. Those who are saying that during the colonial rule, the idea of secularism, a practice of secularism, found its expression and became prominent in India, we must ask one question to them. That if secularism emerged during the colonial rule, that communalism found its wings during the same colonial rule. If you are taking the credit, then certain seed of communism which was sown, that has also to be accepted by you. This is the one perspective that we'll have to understand. I told you, I gave you the hint, that any one of us would be looking at the world history, once the world history begins of yours, and some of you may be aware of the world history, because you have gone through somewhere in right from 9th, 8th, the sudden French Revolution and other perspective that comes to you, your syllabus. And while going through the newspaper and others, you always find that whenever you look at the Western history, at least one reality that comes to us, that religious wars, feuds, they have always taken place in a Western society. Either in terms of Semitism, anti-Semitism, Christianity, Islam, religious conquest, Christian expansion, Jews extinction. So many wars have been there, religious wars have been there, feuds have been there. But ironically, they did not use the word communal there. What were the words they used? They used the word religious war, religious feud, religious persecution. But the term communal was not used. And thus, it becomes a necessity in part of us to look at that how the term communal has been interpreted in the Western discourse and how it has been used in the Indian perspective. I told you last class that when we are talking about the Western perspective, and more precisely when looking at the British colloquial language, colloquial means ancient, old one. The term communal, communalism and communalist have been used in a positive manner. And when I say positive manner, how positive manner? It has been used to reflect an individual's allegiance to the community which he belongs to. Is it not similar to the same article we are talking about in terms of Article 25, 26, 27, 28? That if I do have a right to profess, propagate and practice my religion, and I have the right to assemble, and thus if I belong to religion X, then I do have a right to have allegiance to the religion or those people who belong to the same religion. But ironically, in expansionist colonial policies,
colonial expansion when looking at South Asian context in general and Indian context in particular. The term communalist and communalism was used in negative pejoration. It was not viewed positively as it was viewed, interpreted in the Western context. Rather, communalism was viewed in terms of the ideology of incompatibility between the religions. And more precisely in the Indian soil, the very perspective of how to live with the difference. Let the thousand flower bloom. Let every group of people be there in the society with the same respect, same voices. Tolerance, integration, pluralism which was there. That was used as a political tool. The political landscape of the British Empire, having the right in India, emerged in such a manner that they found certain kind of benefit in keeping the people separated on the basis of religious lines. Their policies changed. As the political dimension changed, their policies also changed. And in this very perspective, we are now looking at the two dimensions. The first dimension which we are talking about, that the same divide and rule policy what the Britishers initiated, they basically made and propagated ideology that the two major religions of that time, Hinduism and Islam, they are incompatible to one. But the seed of communism which was sown during the colonial rule, which was sown in the Indian psyche, implanted in the Indian psyche, imprinted in the Indian psyche, that still continues. And that still haunts the Indian socio-political structure. And thus, now we are looking at secular communal ideology parallelly going on. If on one hand secularism is there, then on the other hand we are finding about the communalism is also there. And irony being there, that is the secularism is providing equal respect and equal place to all religion in India, constitutionally. Then the very ideology of religious incompatibility is also being propagated. And they are running in a parallel manner. Apart from the Western and Indian context, in general, when you look at either when you talk to any dictionary, the dictionary meaning of the communalism is basically reflecting the perspective of right to solidarity. You understand right to solidarity? Because if any individual is having the allegiance to one's community, we are basically propagating the perspective of solidarity between them. Historians, on the other hand, have interpreted communalism differently. Modern India, you might go through Bipin Chandra, let Bipin Chandra now. I quote one line of Bipin Chandra, that communalism is a false consciousness created during the British regime. Mind the line, next line. Objectively, there has been no animosity. Animosity means dushmani. There has been no animosity between Hindus and the Muslims. And if you look at some of other historians, basically one perspective that come out, that communalism is a colonialist construct. So historians either try to analyze communalism in terms of false consciousness, which is not a truth, or colonial construct. However, the social scientists interpret communalism differently from the historians. Before I go to social scientists, let me look at the change. Let me make you understand the change. When you look at the historians, basically you find about that historians' interpretation of communalism is a bipolar one. Isn't it? Because if you talk about the Bipin Chandra, there has been no animosity between Hindus and Muslims. So he is basically looking communalism from the bipolar kind of perspective. But today,
communalism has acquired a multipolar character in the country. It's not merely between Hindus and Muslims, it is between Hindus and Christians, Hindus and Sikhs. So from there, when we are looking at the pages of history where communalism has been interpreted, and we are looking at that discourse in terms of the continuity today, we find about the bipolar character of the communalism has acquired a multipolar character. Clear hai yahan tak? Now look at how social scientists interpret it. The social scientists interpret communalism that whenever any religion, यहां से क्वेश्चन बना बेटा 2 नंबर वाला, क्लियर है मेरी बात? अभी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, 3 दिन हो गया है आपको, अब आप समझिए कि क्यों ऐसा डायग्राम बन रहा है, कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं. Whenever any religion tries to establish a relative identity vis-a-vis another, फिर रिपीट करता हूं, whenever any religion tries to establish a relative identity vis-a-vis another, the seeds of communalism will emerge. ठीक है भाई, ये तो बड़ा लोचा है यार. Whenever any religion tries to establish a relative identity, है ना, क्लियर? कहा है भाई? When secularism is providing you to practice your religion, propagate your religion, assemble, why would any religion try or conspire to establish a relative identity? जब हर लोग को रिलीजियस प्रैक्टिस का राइट मिला हुआ है, इक्वल राइट मिला हुआ है, तो फिर कोई अपना रिलीजन को दूसरे के साथ खड़ा करके क्यों देखेगा? गेटिंग मी? ठीक है, इसका मतलब है, क्वेश्चन है बेटा 2016 का, कल से क्वेश्चन एकदम आपके हाथ में होना चाहिए. इसका मतलब है there has always been a political motive attribution in continuing with the ideology of incompatibility between the religion which manifest communalism. और आज का नहीं बेटा, when I say the political landscape of the Britishers, it made them to look that in a political dimension. The political dimension, देखो क्वेश्चन एक बार, कम्युनिज्म क्वेश्चन निकालो, पॉलिटिकल वाला क्वेश्चन निकालो, देखो है कोई ऐसा क्वेश्चन बेटा पॉलिटिकल टाइप से? नहीं मिला? कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा ईयर है बेटा? क्या क्वेश्चन पढ़ बेटा? नहीं नहीं बेटा, ऐसा क्वेश्चन है कि कम्युनलिज्म इज देयर इन है, क्या है बेटा? मिला? हाँ, फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ? ठीक है, रिलेटिव डिप्रिवेशन में बेटा थोड़ा सा हमको ले जाना है, सम सॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस इन पार्ट ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिकल डायमेंशन. ठीक है, क्लियर? मिल गए बेटा क्वेश्चन 2018 वाली क्वेश्चन. अब वो फिर रिपीट कर रहा हूं, अब 2 नंबर पे आओ. अब मुझे फिर से सुनो बेटा थोड़ा देर. That whenever any religion tries to establish a relative identity vis-a-vis another, communalism will emerge. Clear है? Now the 3 lines which I am saying, you try to understand. First, one-liner. You might have realized that my concepts are one-liner. Religion is simply a belief in a supernatural entity, or religion is simply a belief in a power higher than man. क्लियर है? Religiousness is a nature, but when you talk about religion, 2 components of religion are important. Religion will not emerge only out of the belief. Belief will be put to a practice.
It means the two components of religion are belief and rituals. All right? And the rituals and the beliefs which the believers adhere to. ठीक है. कल मैंने सोहेल से पूछा था which religion, he says sir Islam. I asked him why. So he says I was born to the parents who practice Islam. है ना? हम लोग को भी पूछते तो हम लोग यही बोलते हैं this is the one. It means by birth, on the process of the socialization, we not only develop that belief which has been taught to us, but we have been taught to practice certain kind of rituals related to that belief. Clear है मेरी बात? That very belief and our rituals could be different from one faith to another. That's why secularism as a practice is providing equal respect to all. Clear है? It means religiosity किसको बोलेंगे बेटा? रिलीजियसिटी में केवल एक वर्ड याद रखना है, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस. ठीक है? अब 3 लाइन फिर बोलता हूं. रिलीजन इज अ बिलीफ इन अ सुपरनेचुरल एंटिटी और बिलीफ इन अ पावर हायर देन मैन. एक लाइन बेटा. अब उस सब डिबेट में नहीं जाना है, रिलीजन और धर्म का डिबेट है ना, क्योंकि रिलीजन लेटिन वर्ड से आया रिलीजियो, जिसका रूट लेग है, टू बाइंड, टू काउंट, टू ऑब्जर्व, है ना. उतना में नहीं जाना है. हम लोग का जब भी होता है हम लोग क्या बोलते हैं, धर्म, वे ऑफ लाइफ कर देते हैं, छोड़ दो उसको. ये सीधा सीधा है, रिलीजन है, बिलीफ इन अ पावर हायर देन मैन, एंड दैट बिलीफ इन अ पावर हायर देन मैन will become the characteristics. And when this belief has coupled with that of the rituals and it has turned out to be in a coherent system, which the believers adhere to, the believers know. Clear है? सुन लेना है. But when this religion is being used as a incompatible to another religion, whenever religion would be used in terms of the ideology of incompatibility, communalism will surface. यही क्वेश्चन था. पढ़ो क्वेश्चन को. अब ठीक है बेटा. और एग्जाम्पल देना है, कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है. पता नहीं, मैं ऐसा मानता हूं. आई कैन ओनली सजेस्ट यू. तो किसी का नाम देने की जरूरत नहीं है ना. वो इर्क नहीं करना बेटा कोई एग्जामिनर को वहां पे, ये पॉलिटिकल पार्टी, ये दल, फलना, जरूरत नहीं है. आपसे एक रैशनल थॉट वो मांगता है, रैशनल थॉट दे दीजिए, कोई किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है? अब 2 लाइन में फिर से बोलता हूं, पहले सुन लेना एग्जाम्पल को लेकर. मैंने कहा कि कम्युनलिज्म का एग्जाम्पल अगर देखें तो सबसे ज्यादा बड़ा कम्युनलिज्म का एग्जाम्पल पोस्ट इंडिपेंडेंट में पार्टीशन ऑफ द कंट्री है. ठीक है? 1969 में के लगभग पहली बार पोस्ट इंडिपेंडेंट में जबलपुर में कम्युनल वायलेंस होता है. क्लियर है? एंड द ओनली इंसिडेंट दैट टुक प्लेस दैट द 2 यंग्स boys and girls, they eloped together, belonging to the 2 different faiths. Clear है? And the entire city got communalized. ठीक है मेरी बात यहां से. When the works started emerging, it was found that beneath this, ये तो immediate cause हुआ बेटा. गौर करना लाइन को मेरा, जहां ले जा रहा हूं वहां जाओ. Immediate cause है. Immediate cause will not surface unless and until there is a certain past incident. So the works started finding that says that since long there has been economic rivalry between the beeri manufacturers belonging to the 2 different community. पहले से पास्ट अगर खराब नहीं होगा बेटा तो कोई इमीडिएट कॉज में इतना बड़ा कम्युनल वायलेंस नहीं हो सकता है. नहीं हो सकता है ना. एक सबसे बड़ा जो एग्जांपल है कम्युनल वायलेंस का, वो बाबरी मॉस्क का डेमोलिशन है. ठीक है? मेरठ से लेके गोधरा से लेके मेरठ तक चले जाए, जमशेदपुर, भागलपुर, so many examples are there in which we have found about the communal violence.
Examples are many. Would not be able to do justice with a different kind of counting the communal violences because it has been a history of the Indian society. ठीक है यहां तक. अब दो, एक तो बॉम्बे राइट और एक अहमदाबाद राइट पे दो काम है. पहले दोनों को मैं समझाता हूं, उसको बात समझने को. अहमदाबाद राइट में एक रूमर उड़ी कि मंदिर के सामने कहीं ने कोई डेड बॉडी फेंक दिया गया है, किसी जानवर का डेड बॉडी फेंक दिया. When the team started investigating, it was found that there is a very narrow lane, and in both the sides there are shops, 24 hours open. And through this narrow lens, you can go to the temple. If somebody is carrying a carcass of a dead animal, carcass मतलब dead wood समझते हो ना? अगर carcass animal का ले जा रहा है, somebody might have seen because that would be heavy. Getting me? So rumor plays an important role to mobilize and to propagate the feeling that religions are incompatible. In that society, where Ganga Jamni Tahjeeb that has flourished, for which we use a word that is called composite culture, है ना? आप भक्ति मूवमेंट जब पढ़ते होंगे, भक्ति मूवमेंट बिना सूफी कल्चर के नहीं पढ़ा जा सकता. That impact of Sufi culture on Bhakti movement that has to be recognized by us. All right? For the first time, the distance between man and God that reduced. All right? Reverence से ज्यादा beloved हो गए हम. All right? क्योंकि रिलीजन के साथ एक fear होता है. Fear of breaking the rule, breaking the certain rituals. एक fear of उसको तोड़ दिया सूफियाना ने. सूफी कल्चर ने उसको तोड़ दिया. All right? And the kind of culture that emerged, we attribute with a concept that is called composite culture. That very spirit of composite culture was destroyed when geopolitically the Britishers, in terms of divide and rule policies, and also to distort the certain incidences of history in a communal perspective, they sow the seed of communalism in India. एक राइज ऑफ द फैक्टर, आप हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो आपको एक राइज ऑफ फैक्टर मिलेगा, कम्युनल राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री. मोपला रिबेलियन केरला की तरफ जब जाएंगे बेटा, एग्रेरियन रिवोल्ट है. हुआ क्या कि जो लैंडलॉर्ड हैं और जो लैंडलेस हैं, दे बिलोंग टू द टू डिफरेंट रिलीजन. है रिवोल्ट क्या था? रिवोल्ट एग्रेरियन था. एग्रेरियन रिवोल्ट है ना, उसको ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने कम्युनल कलर दे दिया. सो वन ऑफ द फैक्टर्स व्हेन यू गो टू द हिस्ट्री, यू विल फाइंडिंग अबाउट द कम्युनल राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री. ठीक है ना? टू नेशंस थियरी आएंगे आप, पार्टीशन ऑफ द कंट्री. 1947 we got independence. 1950 the constitution came into force, and in reference to article 14, क्योंकि तभी 1976 आया नहीं था, सेकुलरिज्म लाया नहीं गया था. तो पता नहीं आप हाउ विल टेकिंग दिस लाइन. आर्टिकल 14 एंड सेकुलरिज्म सीम्स टू बी द साइड्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. एक ही जैसा था. इट वाज देयर टू प्रोटेक्ट इट, है ना? एंड वी कैन नॉट से दैट प्रायर टू 1976 इंडिया वाज नॉट अ सेकुलर सोसाइटी. Only change this insertion of the term secularism brought that what was enjoyed upon by the citizen of the country, all right, its insertion of the word in the preamble characterized the nature of Indian socio-political structure. Preamble है ना, उसका character ही change हो गया. What was intrinsic became extrinsic. Hidden था ना भाई, और आर्टिकल है तो सिटीजन्स को एंजॉयड होगा. प्रीएम्बल तुम्हारा कैरेक्टर होता है. सो इट बेसिकली प्रोवाइडेड अ सेकुलर क्रेडेंशियल टू द इंडियन सोशियो-पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. ठीक है, बावजूद उसके द कम्युनल वायलेंसेस वर देयर. ठीक है, यहां तक अभी. अब ये दोनों राइट का जो स्टडी होता है काफी एक्सटेंसिव स्टडी है. उसका एक कॉमन सेंटेंस आता जो मैंने आपको यूज किया था कल परसों, द आर्किटेक्ट ऑफ द कम्युनल वायलेंस. कोई भी हो सकता है.
ठीक है, आई एम नॉट सेइंग, कुड बी द रिलीजियस लीडर, कुड बी द पॉलिटिशियंस, ठीक है, कुड ऑल्सो बी द इकोनॉमिक जायंट्स। तो फैक्टर्स का तीनों तरफ से देखना है बेटा। सो हम सिंपली बोल रहा हूं, द आर्किटेक्ट ऑफ द कम्युनल वायलेंस played the suspicious card of religion so well that they succeeded in their nefarious activities by making religion emerge as a smoke screen, blurring the visibility of the believers. ठीक है, अब लाइन को ठीक से सुनना। We Indians are religious. We are made communal. We are religious. We are required to be secular. है ना? तो इसका मतलब है कि if we are religious, then we are made communal, and somehow or other, this very bipartisan kind of politics, whosoever is playing, all right? अब इसी लाइन को मैं थोड़ा सा सुधार दूं और ऐसा बोलूं, पहले सॉरी बोल देता हूं, the opportunistic politico religious or economic elites of the country for their own interest have still continued the ideology of incompatibility between the religion, and thus communalism sustains. होगा ना? ये बहुत आसान होता है बोल देना आउटसाइड इन्फ्लुएंस। कितना आउटसाइड इन्फ्लुएंस? ये फैक्टर यहां लिखा है ना। अब एक लाइन को ठीक से सुना। The largest minority of the country tends to project, लाइन पर 4-5 लाइन को ठीक से सुनना है आपको। The largest minority of the country tends to project their legitimate discontent against the government and the organizations of the government. And why this legitimate discontent? Because they feel alienated, left out, in terms of the social structure, in terms of employability, in terms of education, and in terms of government representation. Thus, that tends to show that legitimate discontent, that despite so many years, when we are comparing ourselves with the broader majority, we do not find that representation. That very feeling of legitimate discontent, when fueled religiously, fueled politically, all right, a sense of alienation emerged. Alienation मतलब estrangement, कटना. And this sense of alienation further intensified the bipartisan kind of dimension in a society. ठीक है? तो इसका मतलब है बेटा, ऐसा पूछेगा तुमसे, वे फॉरवर्ड समझते हो ना, तुम्हारा सजेशन पूछा जाता था। कंट्रोवर्शियल इश्यूज है ना, कंटेजियस इश्यूज है, तो तुम्हारे सजेशन भी पूछे जाए। ठीक है ना? ठीक है, और फिर बोल रहा हूं, तुम्हारा सजेशन फिलोसफिकल नहीं होना चाहिए है, और बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। अभी मैं पूछूं क्या है, तो मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं मुझे, मैक्सिमम स्टूडेंट बहुत टीचर ही बोलते हैं, सर पुलिस व्यवस्था को ना एकदम चौकस कर देना चाहिए है? इसका मतलब है पुलिस काम ही नहीं कर रही है, क्या बकवास कर रहे हो? उधर जो बैठा हुआ 5 उसके सामने तुम सजेशन दे रहे हो, वो सर्व करके आया ब्यूरोक्रेसी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी मेड मोर स्ट्रेंथ, उसका मतलब कि वो काम ही नहीं करके आया है, वो 45 साल हवा ही काटा है और तभी तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है ना? कुछ वर्ड आएंगे, फिर अब कंसेप्ट है एक्यूमेनिकल बोलते हैं उसको। अब सुन लो पहले, कल देखेंगे, थोड़ा जरूर रुक जाओ। एक्यूमेनिकल मींस यूनिवर्सल। इंदु जैन नाम सुना कभी? अब तो नहीं रही बेचारी, कलकत्ता में टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की चेयरपर्सन थी।
नाम नहीं सुना कोई बात नहीं, हिंदू जैन। सी हैज अ डिस्टिंक्शन in terms of organizing the religious congregation. Religious congregation मतलब संगोष्ठी, है ना, where she would be inviting the different religious leaders from the different faith on one platform. ठीक है, and on from that platform all the religious leaders would basically be promoting those ideas which binds people rather than divide people. ठीक है ना, तो ecumenical ideology बोलते हैं, promoting the universal ideology which binds people rather than, ठीक है, इंटरफेथ डायलॉग होना चाहिए, होगा ना बेटा। कल भी मैंने कहा था, और बहुत मैंने कहा था कि यहां से नहीं सुनना है, मुझे यहां से सुनना है ना। हम लोग को हाउ टू लिव विद द डिफरेंस, जो हमारा कैरेक्टर था उसका अजीब यूज हो रहा है। राइट सिंस चाइल्डहुड वी हैव बीन टॉट हाउ टू कीप डिस्टेंस विद सम पीपल। Am I able to make myself clear? वो सोशलाइजेशन का प्रोसेस गलत है, so we'll have to basically promote the interfaith dialogues. क्लियर है मेरी बात यहां से? अब ये सब पूरे डायमेंशन चलते रहेंगे तब तक 1970s, ज्यादा नहीं हुआ ना, ठीक है, हंसो थोड़ा सा, दांत दिखलाओ, फंडामेंटलिज्म आ गया, और खासकर तो पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा ना, सांस लेना है धीरे धीरे, एक दिन में तो मैं सब करवा दूं। द इंग्लिश वर्ड फंडामेंटल हैज कम फ्रॉम द लैटिन फंडामेंटम, है ना, विच मीन्स टू गो बैक टू द बेसिक्स। तुम्हें से सब 10th 12th किया होगा, कोई साइंस वाला सब होगा, तो कुंजी पढ़ते थे, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो वो बेसिक ही पढ़ रहे थे भाई, है ना। तो गो बैक टू द बेसिक्स, ठीक है, इन विच ये लाइन याद रखना बेटा, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट इज मोस्ट प्रोमिनेंट। गोइंग बैक टू द बेसिक्स in which the interpretation of the religious text is more important. तो ये रिलीजियस रिवाइवलिज्म का एग्जांपल है, ठीक है, क्लियर है मेरी बात भाई? इसमें क्या परेशानी होगा मुझे बताओ तो? इफ एनी रिलीजन ट्राइज टू गो बैक टू द बेसिक्स ऑफ इट्स रिलीजन, क्या प्रॉब्लम है इसमें, बता दो मुझे। क्लियर हुआ मेरी बात यहां से? But in pursuance of going back with the interpretation of the religious text, when the religion becomes intolerant, nurtures the ideology of incompatibility, blind, communalism would be the outcome. है ना, क्लियर है? एक लाइन और सुन लेना बेटा, बामियान इंसिडेंट याद है? बामियान इंसिडेंट, तालिबान 1, जहां स्टेच्यूज ऑफ बुद्धास वर ब्रोकन है, ठीक एग्जांपल तक पहुंच गए अभी, क्लियर है मेरी बात यहां से? दोनों जगह एक ही लाइन बोलना बेटा, रिलीजन बिकम्स इंटॉलरेंट, नर्चरिंग द आइडियोलॉजी ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, व्हेन फंडामेंटलिज्म। परेशानी तो यह ना बेटा कि हम लोग जब कोई कंसेप्ट उठाते हैं ना, नो कंसेप्ट कुड बी प्योरली पॉजिटिव, नो कंसेप्ट कुड बी प्योरली नेगेटिव, we have to interpret the concept from both the sides, ठीक है। तो ये यहां भी कम्युनलिज्म पॉजिटिव था है? अब जैसे आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो एक वर्ड है, मैंने नहीं बोला, याद आ गया तो बोल देता हूं, जैसे इंडियन सेक्युलरिज्म में जो पॉजिटिव कंसेप्ट है ना, ऐसा बोलेंगे। बात कर क्लियर हुई? दो लाइन और सुन लेना बेटा, इधर घुसाना है। इफ कम्युनलिज्म इमर्जेस आउट ऑफ पॉवर्टी एंड रिलेटिव deprivation, then fundamentalism tends to strengthen with economic prosperity. इसी साल का क्वेश्चन है, मुझसे नहीं पूछो।
वो लिबरलाइजेशन लिख दिया, मैं प्रोस्पेरिटी बोल, मुझे नहीं मालूम लिबरलाइजेशन पूछा ग्लोबलाइजेशन पूछेगा, वो भी साला एक अलग पेंडोरा बॉक्स है ग्लोबलाइजेशन। और आपका सिलेबस भी है इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, वो एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है ना। पहला फिर हमको पॉवर्टी और रिलेटिव डेप्रिवेशन को कम्युनिज्म से जोड़ना है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को फंडामेंटलिज्म से जोड़ना है, ठीक है, क्लियर। एंड फंडामेंटलिज्म हैज नॉट टू बी रिलेटेड particularly to one or merely one religion, which has been the norm today. जब भी फंडामेंटलिज्म की बात करते हैं, we talk about Islamic fundamentalism. Equally we need to talk about Hindu fundamentalism. और एक फैक्ट जान लो बेटा, in the 19th century America, when the printing press was invented and when the immigrants started coming in exodus to the America, the locals, they become very fearful that whether this will make them lose their local culture, all right? They felt that they would be uprooted. ठीक? Thus, they published a series of pamphlets called fundamentals. It means fundamentalism first found its expression among the Christians. And there's always all religions where the fundamentalism could be found. ठीक है? Perspective could be there that the same religious dimension could be interpreted differently by the different people, है ना? ठीक है? और थोड़ा डीप जाऊं? सुन लो, सुनो मैं क्या जाता है, मैं हूं अभी, इधर हूं अभी, डरो नहीं, मैं हूं, ठोक बजा कर करके जाऊंगा। वन ऑफ द फैक्टर्स, ठीक से सुनना है, one of the factors for the rise of fundamentalism is the secularism. Take your time, think. What secularism is saying? Secularism is saying that polity and religion are distinct, है ना? This distinction between religion and polity is not entertained by fundamentalists. ठीक है, rise of the modern Islamic fundamentalism in Iran by Ayatollah Khomeini साहब, right? Religion, polity is indeed religion, religion is indeed polity. No distance between these two. नहीं distance differentiation. इसलिए सेकुलरिज्म, कॉलोनियलिज्म, मॉडर्न इंडिया पढ़ा है थोड़ा सा, है? जोर से बोलो ना, पढ़ा है। व्हाइट मेंस थियरी आया है, व्हाइट मेंस बर्डन, है? वैसा वाला बर्डन जब होगा कॉलोनियलिज्म में, जहां पे लोकल कल्चर रिलीजन को सप्रेस किया जाएगा, तो फंडामेंटलिज्म इट बाउंस बैक। इसका मतलब है द फैक्टर्स फॉर द राइज ऑफ फंडामेंटलिज्म कुड बी कॉलोनियलिज्म, सेकुलरिज्म, है? और अब है ग्लोबलाइजेशन। द ऑनगोइंग रैपिड चेंज मे मेक द पीपल दैट दे वुड बी अपरूटेड फ्रॉम देयर रूट्स, ऑलराइट? द पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी ब्रॉट बाय द ग्लोबलाइजेशन will make the people find the solace in a religious text. ठीक है, लाइन को सुनना बेटा। Fundamentalism provides certainty in uncertain world. होगा ना? बहुत रैपिड चेंज आ रहा है, आपको लगता है कि साले मेरा खत्म हो जाएगा, कंटामिनेशन ऑफ रिलीजन हो जाएगा, तो अनसर्टेन है ब्रेन। आप जब रिलीजियस टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो फंडामेंटलिज्म इज प्रोवाइडिंग दैट सर्टेनिटी इन अनसर्टेन वर्ल्ड टू यू, होगा ना? ये डायमेंशन वर्कफुल है, ठीक है? थोड़ा सा लिखो कम्युनिज्म में, अभी है, थोड़ा और जानना है, थोड़ा देर और लगेगा, ठीक है? ठीक है बेटा, विल मीट यू टुमारो, राइट? और हाँ बोलो बोलो बोलो, वीजेवी, VIS-A-VIS, अलग 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 बेटा, हाँ वीजेवी, हाँ ठीक है। कल बेटा सुन लो, पहले कल एक बार क्वेश्चंस को आने के पहले 2 मिनट थोड़ा सा
कम्युनलिज्म और एम्पावरमेंट को देख लेना, ठीक है। तो तुमको थर्ड पेपर में भी क्वेश्चन दिखेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाले, वुमेन्स के, है ना। तो थोड़ा सा पहले एम्पावरमेंट को देख लेते हैं। आपका ऐसे भी एम्पावरमेंट और सेक्युलरिज्म से होगा, तो थोड़ा सा वो क्वेश्चंस को मार्क करके रखना, so that we'll first talk about communalism, we'll finish it, and then we'll pick up regionalism, and then we'll go for empowerment. All right, thank you, good night.